This is Dr. Shalini Babbar. I am a homeopathic physician and a mental health consultant. And with 27 years of my clinical practice, I'm here to share some information how mind and body connection is truly related to our beautiful science called homeopathy. And I'm truly grateful to Team SBL that they have provided this platform where I can share my information with all of you. So let's begin. So आप सबने ये नोटिस किया ही होगा कि स्ट्रेस जब भी होता है तो हेडेक आते हैं, एंजाइटी होती है तो एसिडिटी होती है, एंड जब भी हम बहुत चिंता में होते हैं तो नींद नहीं आती। एंड यस, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट या अंदर से डिस्टर्ब होते हैं तो हमें थकान हो जाती है और जिसकी हमें वजह पता नहीं चलती। सो क्या ये कोइंसिडेंस है? और हमारी बॉडी ऐसे सिग्नल्स देती है कि कुछ तो अंदर अपसेट है जिसकी वजह से हमारा ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है। तो कुछ कनेक्शन है जिसके बारे में हम आज बात करें। सो माइंड एंड बॉडी कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे एक रिसर्च स्टडी की गई थी जिसमें एक रैट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब हमने एज इन द स्टडी सेज जब भी उसको एक स्ट्रेस दिया गया थ्रू अ इमोशनल सर्किट तो कहीं ना कहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जाके हाइपोथैलेमस से जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हुआ, जिससे हीट जनरेट हुई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ब्लड प्रेशर एकदम फ्लक्चुएट हुआ और मोटर सिस्टम में जाके वो रैट को अफेक्ट करता है एंड इट ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम द स्ट्रेस. So this was a study which confirmed that there is a relation between our emotions and our physical responses. And brain and body हमेशा constantly communicate करते हैं एक दूसरे से. ठीक है. नाउ व्हेन इमोशंस अफेक्ट अवर बॉडी तो क्या क्या आता है? माइग्रेन, आईबीएस जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स. स्किन सबसे पहले अफेक्ट होती है जब भी आप किसी भी गहरी चिंता में हैं. देन एस्थमा और इंसोम्निया जिसको हम स्लीपलेसनेस कहते हैं वो भी हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने की वजह से हो जाते हैं. नाउ सिम्टम्स जो है वो रैंडम, वो कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो करते हैं और इंटरनल इम्बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं. मतलब अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से एकदम से समझ आ जाएगा कुछ अंदर गड़बड़ है जिसकी वजह से मैं ये महसूस कर रहा हूँ. सो होम्योपैथी, अवर ब्यूटिफुल साइंस, डे वन से हमने ये पढ़ा है कि इट कनेक्ट्स अवर माइंड एंड बॉडी. तो जब भी एक होम्योपैथिक फिजिशियन केस टेकिंग करता है तो वो किस तरह से आगे बढ़ता है? तो सबसे पहले वो उसके मेंटल जनरल्स पे फोकस करके माइन्यूट डिटेलिंग करके और उसके बाद उसके फिजिकल सिम्टम्स पे आके और उनको कनेक्ट करके फिर प्रिस्क्रिप्शन देता है. सो होम्योपैथी इज द ओनली एंड ओनली साइंस विच आई विल से विच फोकसेस ऑन माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, एंड दैट्स वेयर आवर ट्रीटमेंट लाइज. और इंडिविजुअलिटी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दो इंसान अगर सेम इश्यू से गुजर रहे हैं बट उनके ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट पैटर्न रहेगा डिफरेंट रहेगा बिकॉज दोनों के रूट कॉजेज अलग रहेंगे. सो अगर एक और दो, पर्सन वन एंड पर्सन टू को हेडेक है बट उसके कॉजेज अलग होंगे, कहीं ना कहीं उसका ट्रिगर अलग होगा और उसी तरह से ट्रीटमेंट पैटर्न भी अलग ही रहेगा. तो कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स रहते हैं स्ट्रेस, ग्रीफ, फियर, एंगर एंड इमोशनल सप्रेशन. इमोशनल सप्रेशन एक ऐसा मैं कहूँगी स्ट्रेसर है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उभर के आते हैं और फिजिकली अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं. क्योंकि आजकल की जो भी एरा है उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस. जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ वो सप्रेशन की वजह से उस सप्रेस्ड इमोशन को बॉडी एक्सटर्नली दिखाती है. इट कुड बी अ स्किन इशू, इट कुड बी अ डाइजेस्टिव इशू. सो ये ट्रिगर्स हम ध्यान में रखते हैं व्हेनेवर वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन. सो मैं कुछ ब्रीफ केस टेकिंग आपके साथ अपनी केस रिफ्लेक्शन शेयर करूंगी. सो एक सिक्योरिटी गार्ड का केस है विच ही केम टू माय क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ एंजाइटी एंड फियर. हमेशा घबराहट और अंदर डर, लोगों से मिलने का बहुत बड़ा डर था उसके अंदर. जब मैंने डिटेल केस टेकिंग की तो मेंटल ट्रॉमा जो बचपन में उसने फेस किया वो उभर के आया. उसके
चाचा उसके फादर को बहुत गलत बिहेवियर देते थे, जो इसने अपने बच्चे से ये बड़ा हुआ। तो उस वजह से एक फियर अंदर आ गया। जब मैंने डिटेल केसिंग टेकिंग की और सिमिलमम प्रिस्क्राइब किया, उसके साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स ऑफ कोर्स एडवाइस करती हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस में। आई कुड सी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट विद इन अ मंथ। उसकी घबराहट और उसकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी। So this is the beauty of our science. Then we come to case reflection 2. It's a case of a 12-year-old child. So उसकी मदर कंप्लेन करती है कि इसको गैस फॉर्मेशन है और सिवियर हेडेक्स है इवन आफ्टर हैविंग slight amount of fried food, as in puri, pakoras. So at this age, we don't expect a child to react like this, his body to react like this. But detailed case taking showed that he was a sensitive child and an overthinker. He was so disturbed by some adverse situations जो बाहर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती थी तो उसको बहुत डिस्टर्ब अंदर तक फील हिसाब से जब सिमिलम प्रिस्क्राइब की गई, हिज मदर वाज सो हैप्पी विद द इम्प्रूवमेंट दैट नाउ ही कैन डाइजेस्ट वॉट एवर इज ईटिंग एंड इज नॉट कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक्स ऑल्सो। एंड केस रिफ्लेक्शन 3 है सीवियर पैल्पिटेशन, बहुत ज्यादा धड़कन। 26-year-old का आता है मेल हु हैज लॉट ऑफ पैल्पिटेशन एंड स्लीप लॉस। तो केस टेकिंग से पता चला कि कुछ तो ब्रेकअप हुआ उसका रिसेंटली विच वाज गिविंग हिम दोस पैल्पिटेशंस। सो जब इंडिविजुअलाइजेशन किया गया तो मेडिसिन के बाद विद इन 3-4 days, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ही वाज सो मच बेटर, 90% better. So homeopathy is the only science which focuses on the mind and body connection, और वही कनेक्शन को अगर हम फॉलो करें तो हम राइट मेडिसिन पे पहुंच के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एंड व्हाट मेक्स होम्योपैथी यूनिक? यस, इंडिविजुअलाइज हीलिंग है, क्योंकि हर एक इंसान का ट्रीटमेंट लाइन अलग रहेगा। एंड हम इमोशनल पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कि उसका हमें मेंटल पैटर्न के साथ फिजिकल पैटर्न, एपेटाइट, थर्स्ट, स्लीप, ऑल द पैरामीटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर प्रिस्क्रिप्शन। एंड लेट मी टेल यू कि एक होम्योपैथ को एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। So if you listen to the patient attentively with empathy, half of the patient is treated. I'm telling you with my personal experience, I've seen so many patients walking out of my clinic with so much reassurance, and they feel very light after my sessions. Okay, now coming to the susceptibility कि हर इंसान क्यों अलग एक पैटर्न डिस्प्ले करता है इवन दो ही हैज द सेम प्रॉब्लम। लाइक देयर आर टू पीपल हु हैव been exposed to like cold weather or change of weather, but not both of them will suffer the same way. क्यों करता है? Because they have been brought up in different environment and their system is strong, immunity is strong, and that's what the outcomes are different. अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो एक सीवियर आउटकम आएगा, एंड वाइस वर्सा इम्यूनिटी अच्छी है तो वो माइल्ड सिम्टम्स होके ही गुजर जाते हैं। एंड यस, रोल ऑफ लाइफस्टाइल is very important when we as homeopathic physicians prescribe in our practice कि along with the medicine, if they do not have sleep hygiene, अगर अच्छे से वो एक sleep pattern नहीं follow करेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं अपनाएंगे, एंड बैलेंस रूटीन विच इंक्लूड्स डाइट, विच इंक्लूड्स प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न विच दे शुड फॉलो, तो वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। दैट वुड बी अ हाफ डन ट्रीटमेंट। तो पार्शियल ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं वो होता है। तो अगर लाइफस्टाइल का मैं हूँ तो मैं मेरा तो मैंडेटरी है कि लाइफस्टाइल हैज टू इम्प्रूव इफ यू वांट कंप्लीट गुड रिडन्स फ्रॉम योर एलिमेंट्स। ठीक है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत। देन वी कम टू बॉडी सिग्नल्स। सो हमारी बॉडी कैसे रिफ्लेक्ट करती है? जब हमारे को सिर दर्द होता है तो वो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो कहीं कुछ तो ओवर थिंकिंग हुई है या कुछ ओवर एक्सर्शन, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे, सो हेडेक्स आ जाते हैं। एंड देन स्किन इश्यूज आर ड्यू टू इंटरनल इम्बैलेंस। देन अगर किसी दिन हम बहुत ज्यादा engaged हैं किसी काम में and which is giving us a lot of worry, then we'll end up with loss of sleep. So these are the body signals which are the language of our body, which and then
shouting at us कि okay, take care of us so that we feel better. So these signals should be taken into account. एंड हमेशा ये ध्यान रख के हमें प्रैक्टिस में आगे बढ़ना होता है कि डिसीज सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, इमोशंस, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, ऑल आर इंटरकनेक्टेड. जब आपका माइंड है और आपकी फीलिंग्स, लाइफस्टाइल एंड सबसे ऊपर आता है एनवायरनमेंट, बिकॉज पेशेंट्स जो हैं किस एनवायरनमेंट में अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो उसका थिंकिंग पैटर्न कैसे है. So if you are in a positive environment all the time, so आपका thought pattern वैसा ही रहेगा and you will be less complaining of all the ailments. So हर disease के पीछे एक story है which I have noticed in my practice and that story should be listened to. जैसे मैंने पहले कहा, एक active listener होना होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथ के लिए बहुत ही important हो जाता है. So stress, grief, fear, उसके fear and life experiences सुनना बहुत. So what patients should do, they should ऑब्जर्व द बॉडी सिग्नल्स. बहुत अच्छे से अपने बॉडी की लैंग्वेज को सुनो, समझो, एड्रेस करो, बात करो अपनी फैमिली से. और अगर बहुत इश्यू है तो डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथिक फिजिशियन से एडवाइस लो व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट. और वो जो इंडिविजुअलाइज केयर होम्योपैथी में है, दैट्स द ओनली साइंस वी क्लेम इट दैट माइंड एंड बॉडी will heal only through homeopathy. And that's my thank you note, that always listen to your body, बिकॉज ये चिल्लाने से पहले बोलती है, और उस लैंग्वेज को अगर समझेंगे so we will be able to live a smooth and happy life. That's it for my presentation today. Thank you for attention and patience, and thank you team SBL once again, so that I could share my information with all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Now we can have the question and answers, right? So, जैसा कि आपने बोला कि हमारे इमोशंस, मैम आई थिंक आपका कहीं और किसी दूसरे सिस्टम पर भी एक्टिव है. You talking to me? यस. नहीं लॉगिन कहीं और भी. नहीं नहीं नहीं. अच्छा, ठीक है. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कौन से ऐसे डिजीज कंडीशंस हैं जो हो सकते हैं हमारे इमोशनल सप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ग्रीफ की वजह से. ओके, सो हम्म. इमोशनल सेप्रेशन नंबर वन पे आता है. जब हमारे एलिमेंट्स की बात करूं तो इमोशनल सेप्रेशन की वजह से स्किन डिजीजेस नंबर वन पे है. हम्म. देन कम्स डाइजेस्टिव इश्यूज. सो उसमें राइट. आता है इरिटेबल बाउल एंड ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक क्रोहन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस हैव द बैकग्राउंड एज इमोशनल सेप्रेशन. आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस. सो क्योंकि गट हमारी बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है विद अवर mind. So gut के issues are mostly related to emotional suppression. ओके. आई थिंक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हेडेक जो कि बहुत कॉमन है आजकल, ये भी एक इसका मतलब कॉज हो सकते हैं. Yes, yes, headaches, राइट. hormonal imbalance again is directly related to our हम्म. emotions. So जब भी हार्मोन imbalance होगा, चाहे वो फीमेल हार्मोन्स हो, चाहे थायराइड हार्मोन्स हो, इवन डायबिटीज हैज runs in the family, but कहीं ना कहीं हम्म. stress also is a trigger for diabetes. हम्म. Excuse me. So the next question is, how does homeopathy explain the connection between emotional disturbances and physical disease? Almost it is. I think I explained it in my Yes, slide yes. where I showed that axis कि वो proper एक channel है which gets activated when there is a stressor from the Yes. prefrontal cortex to the hypothalamus to the Hmm. sympathetic nervous system. So that Hmm. chain gets activated और वो chain of events start हो जाते हैं. There is palpitation, there is temperature fluctuation, there is blood pressure fluctuation. वो पूरा जो chain अब activate होता है, and that explains कि mind और body का connection है. कहीं ना कहीं बस stressor की weight है body को, that it gets into an active mode. Next is the most important. How does a homeopath identify emotional cause? Most तो important. ये हमने अपनी मतलब when we were studying homeopathy, so our professors were like, आपको if you are going leaving this college as a homeopathic physician, सबसे पहले good observer बनना सीखो and a Right. good listener बनना.
So if you observe the patient very carefully and listen whatever the stories he narrates with all the patients, you will be able to join the कहीं जो भी इसके present issues हैं, they're all related to some past anxiety, some trauma. So Hmm. observation, body language, the way patients describe, and the patients break down in front of physicians. If Hmm. you are so empathetic, वो आपको trust में लेके वो break down करते हैं, and when they break down, they even express more clearly what happened and why they are suffering. So this is how the prescription is becomes so strong now whenever you see them very carefully. Right. So there is a one more question. What is the role or impact on infant health or conditions because of change of emotions during pregnancy? Ah, such a beautiful question. That's such a beautiful question. बिल्कुल बहुत बड़ा connection है ये. From see, infant, the unborn child is connected to the mother by the cord. जो भी emotions उस time mother experience करती है during 9 months of pregnancy, all are being passed on to the unborn child. Tabhi, what is recommended during pregnancy is that the mother gets a happy environment. It's recommended that listen to some mantras which give you a positive feeling. Because I have had cases in my practice where the mother has come with children with some thumb sucking and some nail biting at very like 2 year of age, and they're like very stubborn children, so much anger. And when I go into the deep and ask them how was your pregnancy, and then they tell me yes, the pregnancy was stressful, they were not happy, there was some tension going on in the family when she was carrying the child. It's a very strong connection, and it's an advice to all the mothers to try and be happy throughout the Hmm. pregnancy period. Right. So the next is if a child is born with some disease like reflexes due to which he vomits some of milk. So in this kind of rare disease, what is the role of emotions and also homeopathy? I want Can I our repeat? question to be repeated. Yeah. Yeah. If a child is born with some diseases like reflexes due to which he vomits some of milk, so in this kind of rare disease, what is the role of emotions and also Oops, the child is vomiting out milk at like a newborn child, if the question is about actually she mentioned only the child, but in the initial stages this is the normal. yes, and if it is a curdled milk, it is normal. Yes. But yes, if it is milk as it is, which is being vomited out, so there could be some disturbance in the digestion, which we Digest. have good medicines for. So we can always look into the case with all the details and see what medicine should be prescribed, and whether or not emotions played a role have to be asked with the parents. Right. Okay. Someone thank you to you, Dr. Shalini, for the wonderful information. My pleasure. My pleasure. Nowadays, we hear a lot about backflower remedies, which works specifically on the mental and emotional plane. What are your thoughts into integrating the use of backflower remedies into an individual's daily life? Very honestly saying, I don't use backflower remedies. Yes, there are doctors who are doing it and getting results, but I have never used and maybe don't plan to use in my practice. So it's not, I'm not the right person who can comment on. Okay. Next question is how does homeopathy differ from other medicine in understanding the disease? Oh, the answer Allopathy. is it's a very apt question. So Yes. no other pathy, I will say, will focus so much on emotions unless and until Yes. if a person visits a psychiatrist also for some maybe some loss of sleep, so the psychiatrist would prescribe some sleep medicines कि okay इससे हो जाएगा जाओ सो जाओ, but उस इंसान को नींद क्यों नहीं आ रही है, only we as homeopaths put up that question कि क्यों नहीं आ रही Hmm. है, tell me. Cause. Maybe something is wrong behind. Maybe she or he lost some loved one. Maybe Hmm. he or she lost a job. Maybe something major is going on.
That's the only difference, and that's the most important difference. We as homeopaths stand apart in this. I would say this criteria makes us beautiful amongst all the pathies in Hmm. today's world. So the next question is, how will you differentiate two patients with the same disease based on mental symptoms? This is very common, like, uh, With the same disease based on mental symptoms. So let me just quote an example. देयर आर टू पेशेंट्स, दोनों को माइग्रेन है, ठीक है। अगर कोई और yes. पैथी में जाओ, बोथ विल बी गिवन सेम मेडिसिन, वासोग्रिन दे Hmm. देंगे, ओके, इससे आप ठीक हो जाओगे। बट मी एंड वी ऑल एज होम्योपैथ्स विल नेवर डू इट। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द कॉज। फर्स्ट पेशेंट सेज मेरे को सन से होता है, वेन एवर आई गो इन द सन मुझे होता है। द सेकेंड पेशेंट से वेन एवर पीरियड्स आर गोइंग टू अपीयर तब मुझे हेडेक होता है। So the medicine totally changes for the other patient. So that's how our treatment pattern goes. It will not be the same. Agar some sun headaches will have a different set of medicines. Premenstrual headache will have a different set of medicine. जो sun headache वाला है उसका amelioration होता है by pressure. If he presses his head hard or ties a band around, he feels better. But premenstrual headache वाली को लगता है कि if I eat a chocolate, I feel better. So the medicine Hmm. changes. The improvement can only be seen when you go into detail. Okay. Next question is, what role does counseling play? I will say myself as a counselor, it's so gratifying to speak to my patients in my practice and tell them that how they should be tackling themselves. It's such an important role. Counsel or a homeopathy physician ने अगर काउंसलिंग कर दी ना, so it's like an icing on the cake, because patients want to vent out. वो सिर्फ अपनी बात बताना चाहते हैं, because there is nobody else to vent out. सब लोग जज करेंगे उनके according, and yes, people might judge about weird issues they face, but we as homeopaths listen to them empathically. And myself as a mental health counselor, उनको जब भी मैं जो भी माइक्रो डिटेलिंग करूंगी, उनके साथ टेक्निक्स एडवाइस करूंगी, so that helps the treatment to accelerate, because then they know what's wrong with them, because I make them self aware of their emotions, so that really helps. Hmm. Next, what are the limitations of homeopathy? Limitations, yes, we do have surgical case, purely surgical cases are our limitations. We do Hmm. not put our hand into it, and we are very honest about, open about it. It's okay, because every pathy has limitations, so do we have. Yes. Hmm. So it's okay, and always we should have an integrated system of treatment. We Hmm. should not be sticking to one. It should be, Yes. together. Yes. Back floor remedy. Okay. How to manage suppression of emotions in the brain disease. Okay. Can physical pathology exist without mental disturbance? So there are some issues where pathologies exist without disturbance. So it could be things. Let me quote examples, like if a patient has varicose veins, Hmm. so may not have an emotional background, but it could be a lifestyle issue, that he was hanging his legs for long, or he was in a stand. His occupation is so that he has to stand for long, so he can land up with varicose veins. Hmm. So, not all pathologies, I will say, will have an emotional background. There will be some issues which will be because of the lifestyle or the posture of the child. Neck pains, backaches. You can have due to long screen exposure, Hmm. pain in the eyes. So this watering from eyes. How to rule out cause in newborn with physical deformities? Physical deformities in newborn can have a genetic background. Yes. So, if some parents or close relatives have some physical deformities by birth, there are chances that genes would be passed on to the child, and he may also land up. So, in this case, genetic studies are done to see the cause of uh, physical deformities. There is a one more question. How would you approach patient whose illness started after a major emotional shock? How would you diagnose? Start the case taking after a major emotional shock. Okay. So,
In this case, I would tell him to take me back to that point from where he thinks that his illness started. So he would narrate me the entire event from the day one of the incident till today, uh, sequence wise, and I would understand, okay, this would have led to this and this would have led to this, and whatever issues he's facing on the day to day because of that major shock would be resolved only after I take sequence of events from day one. So for example, somebody lost her husband 2 years back and she says she's not been keeping well since that day. So I take note of Dramatic. each and every event. Okay. Can social factors like relationships, work, stress influence disease according to homeopathy? Yes, why not? That's what I was talking. The environment. Environment includes our social factors. If you are to all like a working woman who is always under pressure in her Hmm. office, would end up with some issues like headaches or maybe issues with the digestion or with sleep. So social factors play a major role. But let Hmm. me tell you one more point. Social factors do play a major role. Again, it is the susceptibility of the patient, how he is affected. There will be two Yeah. people under the same environment. One is not affected because probably he is a strong person. He Yeah. doesn't care much about what others say. But the second who is sensitive will get affected. Right. And that's why in homeopathy, for two patients, medicines are different. Definitely, definitely. Right. So, what is the role of miasms in emotional diseases? Okay, miasms, yes, they play a major role. We have all studied in organon that miasmatic उसका जो basis है वो समझ के ही हमें आगे बढ़ना होता है. So, psoriasis, psychosis, syphilis, Yes. we because before prescribing a constitutional remedy, we always look into account that is this medicine according to the miasmatic makeup of the patient or not. So Hmm. miasms have a major role. That goes without saying. Yes. Yes, this was the concept. Like, can sadness cause disease? I didn't get you. Can sadness cause disease? Long duration of sadness, why not? छोटा मोटा चलता है, Right. बट लॉन्ग एंड उसके उससे उभर नहीं पा रहा है अगर पेशेंट, हाँ. तो यस, कुछ ना कुछ तो होके ही रहेगा. बॉडी ऐसे बोलेगी, एक पहले बोलेगी फिर चिल्लाएगी. सो हाँ. बिफोर इट शाउट्स, लेट्स लिसन. Why is it important to talk about feelings? ओके, फीलिंग्स अगर नहीं टॉक करेंगे ना हम अपनी फीलिंग, वो दब रहेंगी. दब, दैट्स कॉल्ड इमोशनल सप्रेशन. Hmm. It's better to talk about and find somebody who is trustworthy, who can listen to us without judgment. And it's better to talk about anything which gives you disturbance. So Hmm. once you vomit it out, you start feeling lighter. That baggage should not, you should not carry the baggage every day. आज मैं ये सोच रहा हूँ, सोचते सोचते ही मैं निकल गया काम पे. Vent it out. And if you can't find somebody, take out a notebook and journal it. That's also a kind of letter. You feel Hmm. better कि मैंने ये सब कुछ एक कॉपी को दे दिया and it's not with me. Go walk off with that feeling. You will start feeling better. Thank you, ma'am. Now, next. मैम आप म्यूट कर लीजिए अपना. Mute. So, we are having three names for the best selected questions. Dr. Bhakti, Vasant Kumar, and third is Sophia Fatima. So आप तीनों अपना कॉन्टेक्ट नंबर, क्वेश्चन एंड आंसर जो चैट बॉक्स था, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सके, एंड इट विल बी इजी फॉर अस. सो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक यू मैम फॉर यू कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए एंड आपने आज का जो टॉपिक है काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एंड आई एम श्योर क्वेश्चंस भी काफी सारे थे, तो लोगों को इस चीज के बारे में भी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि हमारे इमोशंस, हमारा स्ट्रेस एंगर पर जा सकता है. राइट. सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.